A very good morning, everyone. Welcome to your another Science 1 chapter session on the chapter heat that we are doing. As we said in this chapter, we are studying a number of topics like heat versus temperature, latent heat, regelation, anomalous behavior of water, dew point and humidity, specific heat capacity, and then heat exchange with some questions based on these. We have seen the difference between heat and temperature. We have seen what is latent heat and how it is coming into play when any phase change happens. We have seen the process of regelation also when ice gola is getting formed, which means now we are moving ahead and we are going to cover the topic today that we will be able to understand the concept of anomalous behavior of water and explore real life examples of it. My suggestion again is watch the entire video once in full flow without pausing and then come back again to keep on writing all the important points that come in between. Okay, so let's start with it by experiencing a very common thing. आपने कभी ये देखा है कि आपने ऐसे बॉटल पूरा भर के रखा एंड देन जब वो पूरा बर्फ बन गया तो थोड़ा आइस उसके ऊपर आ जाता है, राइट? वी हैव ऑल सीन दिस. बॉटल कभी कभी खोलने में भी बहुत मुश्किल होती है. सो वी हैव सीन दैट आइस कम्स आउट ऑफ द बॉटल इफ इट इज फुल्ली फिल्ड बिफोर फ्रीजिंग. पानी तो आपने ऊपर तक भरा था बट जब वो आइस बना तो वो बाहर निकल गया. We have also seen that sometimes the bottles crack after freezing. अगर आप बॉटल को पूरा भर के फ्रीजर में रखते हो तो कभी कभी वो एक्सपैंड होता है और बॉटल में क्रैक्स आने लगते हैं, राइट? वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दिस. द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक इज दिस हैपनिंग? ऐसा हो क्यों रहा है? नाउ व्हाट वी ऑलरेडी नो इज व्हेन वी हैव अ कोल्ड लिक्विड, जब भी कोई लिक्विड ठंडा होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, राइट? बट जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है. एक्सपैंड होता है मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. किसी चीज़ को जब हम लोग खींचते हैं तो वो एक्सपैंड होता है. जब किसी चीज़ को बहुत क्लोज करके सिकुड़ जाता है वो तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एक्टिविटी. अगर आप गर्म पानी में एक बलून को रखोगे देन इट एक्सपैंड्स ऑन हॉट वाटर. जब आप उसको ठंडे पानी में रखोगे देन इट श्रिंक्स बैक एज कोल्ड वाटर. क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में एक्सपेंशन होता है, कोल्ड वाटर में कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर लर्निंग. लिक्विड्स जनरली एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, राइट? हीट करने से एक्सपैंड एंड ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्ट. नाउ टेकिंग दिस बैक टू आवर ओन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग द बॉटल, डू यू थिंक दिस इज रियली हैपनिंग ओवर हियर? Do you think in this case also when you are cooling, जब आप ठंडा कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? Well, I don't think so. I think यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपेंशन हो रहा है. This is true for water. This above statement that we have studied is true for water only up till 4 degree centigrade. मतलब जब हम लोग पानी को 4 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. 4 डिग्री के ऊपर जब वो हीट करते हैं तब एक्सपैंड करता है, सारी लिक्विड्स की तरह. बट बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड द ऑपोजिट हैपन्स. व्हाट ऑपोजिट हैपन्स? बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग. बिल्कुल उल्टा जो हमने पढ़ा उसका. तो 0 से 4 डिग्री के बीच में द वाटर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग and it contracts on heating. So what do we need to know from here? That in general when a liquid is heated up to certain temperature it expands and when it is cooled it contracts. Okay, this is in general. Water however shows a special and exceptional behavior. If we heat water from 0 to 4 degree it contracts instead of expanding. At 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम. क्योंकि जब हम लोग सपोज 10 डिग्री से वाटर को ठंडा करते करते 4 डिग्री तक लेके आए, वो कॉन्ट्रैक्ट होके एकदम कम हो गया, वॉल्यूम सबसे कम हो गया, राइट? उसके बाद अगर हम लोग 4 डिग्री से और ठंडा करेंगे 3 डिग्री तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, राइट? दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनोमलस का मतलब ही होता है एबनॉर्मल. तो वाटर 0 से 4 डिग्री के बीच में एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है ये. हेंस इट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वेयर डू वी सी दिस इन रियल लाइफ?
We have already seen the example that when we freeze water inside a water bottle, this expansion of water happens. आपने और देखा होगा ठंडी जगह पे क्या होता है, जो वाटर पाइप्स होते हैं जिसमें से पानी बहती है, जब बहुत ठंडी होती है तो वो पाइप्स क्रैक हो जाते हैं. क्रैक क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर का जो पानी है वो एक्सपैंड कर रहा है और वो पाइप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जब वो बर्फ बन गया तब. एंड हेंस द पाइप्स क्रैक. We also see this example in nature, where let's try to understand. Think about this question. In cold countries there are lakes and ponds, right? जब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो बर्फ बन जाता है. अगर पूरा पानी बर्फ बन गया, then all the fishes in the ponds should also freeze and die. But do you think this is happening? Well, let's look at the pond. No, the fishes are not dying. Rather, there is ice only on the top. बट इन द बॉटम देर इज नॉर्मल वाटर जहाँ पे फिशेज अपना आराम से रह सक रहे हैं. हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? टू अंडरस्टैंड दिस, ऑल्सो थिंक ऑफ दिस सिचुएशन दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब आइस हमेशा वाटर से हल्का होता है. सो दिस इज वन थिंग वी रिमेंबर बिफोर गोइंग टू द रीजन, दैट जब भी कोई चीज़ एक्सपैंड होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसका वेट हल्का हो जाता है. वैसे ही जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है. जैसे ही वो एक्सपैंड हुआ, उसकी डेंसिटी कम हुई तो वो उसका वेट हल्का हो गया. इसीलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पॉन्ड, लेट्स लुक एट दिस वीडियो. The anomalous expansion of water plays an important role in the survival of aquatic animals and plants in cold countries. During winter season, as the temperature of water decreases, water at the surface of lakes, rivers, sea, etc. starts contracting. That is, its volume decreases and density increases. Hence it sinks to the bottom. This process continues until the temperature of all the water in a lake falls to 4 degrees Celsius. Now, as the water at the surface cools below 4 degrees Celsius, it expands instead of contracting, and thus its density decreases. As a result, it becomes lighter than the rest of the water and remains on the surface of the lake. The temperature of this water goes on decreasing to 0 degrees Celsius, and finally it's converted into ice. As ice is a bad conductor of heat, water below surface layer remains at 4 degrees Celsius. As a result, fish and other aquatic animals remain alive in this water. So we have seen that nature is playing its best role, and to sum it up, to answer the question that how does anomalous behavior of water preserves aquatic animals in cold region? Well, due to cold temperature, water in the lakes and ponds start to cool. As a result, the cold water, which is heavy, goes down and it is replaced by warmer water which is light. So the warmer water comes from the bottom, right? And this happens up till all the water has reached 4 degrees centigrade. As the temperature goes below 4 degrees centigrade, the topmost layer of the water begins to expand due to anomalous behavior of water. तो अब वो ठंडा होके भारी होने की जगह में ठंडा होके हल्का हो रहा है, right? It is expanding and it is staying on there. This expanded water is lighter and it keeps floating on the top until the top layer becomes ice. This ice is a bad conductor of heat and it does not allow any heat from the bottom of the lake to escape out. Thus, the water in the bottom of the lake is warmer and hence the aquatic animals are preserved. So with this we have learned a very important concept seen everywhere wherever we have water freezing, which is called anomalous behavior of water. Thank you so much everyone for the session. Have a nice day.